Hello dear student, listen carefully. In our previous lecture, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन. Law of mass action, it is a theoretical concept given by Cato, Goldberg and Peter Margay, जिनके अनुसार rate of or speed of a chemical reaction depends directly on the product of concentration of the reactant raised to some power which is always equal to the stoichiometric coefficient. But later on it was found, after performing several experiments, it was concluded that it is not necessary that the power to which reactant terms are raised is always equal to stoichiometric coefficient. It is not necessary. That power on which rate of reaction depend actually can be calculated experimentally only. इसको एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जाता है कि किस एक्चुअल पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के किस एक्चुअल पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. दैट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली एक्सपेरिमेंटली एंड दिस पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और ये पावर जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये नेसेसरीली रिएक्टेंट के स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल होगा ही, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो. ये इट मे बी और मे नॉट बी. ये स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिफरेंट भी हो सकता है. सो रेट लॉ इक्वेशन, दिस लॉ इक्वेशन इट इज ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट नॉट थियोरिटिकल. तो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट इट इज. Rate law expression is an equation which tells that on which actual power rate of a given chemical reaction depends. Clear? Once again I repeat, rate law equation or rate law expression is the equation, mathematical equation, which represent that on which actual power of the reactant rate of chemical reaction is depending, and that must be calculated, must be determined experimentally. So it is a experimental concept. Clear? तो रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और जिससे रिएक्टेंट टर्म का पावर, जिस पावर पे एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये पावर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी, बट एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. प्लीज पे अटेंशन, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सी, इफ यू आर गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ इक्वेशन, वो दिया रहेगा बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, यू कैन नॉट कैलकुलेट. तो अगर वो दिया हुआ है, इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ इक्वेशन इज गिवन, ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो भी आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज के पावर, जो भी पावर है, रिएक्टेंट टर्म का जो पावर है, उस पावर का सम योग ही उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है. Once again I repeat, if rate law expression, the expression which tells that on which actual power rate of chemical reaction is depend upon, and this equation should be calculated, should be determined experimentally. So if this equation is given, then the power of reactant term, sum of the power of reactant term will be called order of that reaction. Now look at the board for the definition. See, order of reaction. What is order of reaction? It is the sum of the exponent. Exponent means power, or power to which the concentration terms are raised in rate law expression.
रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट टर्म का जो भी कंसंट्रेशन का पावर है, ठीक है, उस पावर का सम ही उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी for a general reaction, let us suppose we have a general reaction small a plus small b. This small a and small b represent stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर we write before the reactant terms or reactant product, that numbers are called stoichiometric coefficient. So let us suppose we have a reaction involving stoichiometric coefficient small a capital A plus small b capital B giving a product. ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है कि रेट इक्वल टू k इंटू के इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A जिसका पावर है m विच इज नॉट इक्वल टू A. ठीक है, ये a के बराबर हो भी सकता है या उससे डिफरेंट भी हो सकता है. लेट अस सपोज इट इज m, ये गिवन है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर होना चाहिए b, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया या b नहीं है, कोई दूसरे पावर पे डिपेंड कर रहा है विच इज इक्वल टू n. ठीक है, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन. देन order of reaction for this general reaction, what will be the order of reaction? Sum of the power m plus n will be the order of the reaction. Clear? Here this m and n, what is m and n? We can say m is the order of reaction with respect to reactant A, and n is the order of reaction with respect to reactant B के respect में ये, and m plus n is the called overall order of the reaction.